Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel NCERT Studies. So today I am going to teach you zeros of polynomial. So a real number alpha is called zero of a polynomial p of x if p of alpha is equals to 0. This is the definition of a zero of a polynomial. For example, let we have given a polynomial p of x equals to 2x plus 4. तो हमें इसका ज़ीरोस फाइंड आउट करना है। ज़ीरोस फाइंड आउट करना है कि अल्फ़ा यानी कि कोई भी हम एक रियल नंबर लेंगे और इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे, और अगर p ऑफ अल्फ़ा हमारा ज़ीरो यानी कि वो नंबर रखने पर अगर वैल्यू हमारी ज़ीरो आ जाती है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे -2 सब्सटीट्यूट किया x की प्लेस पे, देन वी गेट 2 इंटू -2 प्लस 4. सो p ऑफ -2 इक्वल्स टू -4 प्लस 4. So p of -2 equals to 0. So hence we can say that -2 is the zero of p of x. Clear? So let's understand with more example. एग्जाम्पल नंबर 1. सपोज़ हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है ज़ीरो, 2x प्लस 5 का हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना है। तो हम इसका ज़ीरो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लेट कर लेंगे कि लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ p ऑफ x विच इज़ 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. Transfer constant part to the right hand side, so we can write 2x equals to -5, then x equals to -5 by 2. So then x equals to -5 by 2 is the zero of p of x. So we can say that -5 by 2 is the zero of p of x. So since it is a linear polynomial, so that's why it has only one zero. If we want to verify it, we can verify by substituting the value of x over there. So p of -5 by 2 equals to 2 into -5 by 2 plus 5. So we can cancel 2, so we get -5 plus 5, and then we get 0. So now let's take one more example. So here is our next example. Find the zeros of the polynomial 6x square minus 3 minus 7x. So we let this px equals to 6x square minus 3 minus 7x. So first we write this in its standard form. So we can write in this way, 6x square minus 7x minus 3. सो नाउ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है. सो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 6. तो व्हेन वी मल्टीप्लाई देन वी गेट 18. नाउ हमें 18 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें, यानी कि उनका डिफरेंस या फिर एडिशन कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए. एंड इफ़ वी मल्टीप्लाई दोज फैक्टर्स, then the product should be equal to, and such numbers are 9 and 2. So we can write here 6x square minus 9 minus 2 into x minus 3. So we'll write here 6x square minus 9x plus 2x minus 3. So we can take common 2x. We can take here common 3x. तो जब हम 3x कॉमन लेंगे देन वी गेट हियर 2x minus 3 and we take here common 1. So we get here 2x minus 3. From these two terms we take common 2x minus 3
and the remaining is 3x plus 1. So since we have to find out it's a 0, so we write therefore p of x equals to 0. So that means 2x minus 3 and 3x plus 1 equals to 0. So we can write here 2x minus 3 equals to 0 or 3x plus 1 equals to 0. So we can write this 2x equals to 3, and here we can write here 3x equals to minus 1. So now we can write x equals to 3 upon 2, and here or x equals to minus 1 upon 3. So therefore we can say that 3 upon 2 and minus 1 upon 3 are the zeros of p of x. ओके, सो आज के सेशन में बस इतना ही. सो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड.